Hello everyone, this is Dr. Lalit Mittal from Gigglesclinics and my own space. I'm practicing in Fortis Hospital, Shalimar Bagh. I'm a neurodevelopmental pediatrician. Plus, I have done my post-graduation in pediatric nutrition from Boston, USA. And I'm the director of Gigglesclinics. So this video is very important regarding the role of nutrition in early childhood and how this nutrition is important in early childhood and what are the benefits of a healthy nutrition in early childhood, which will enable in our later life a healthy and nutritious and a better life in future. So this video is all about this. So we'll be going in detail about the nutrition and what are its benefits. Once again, good evening to all. So इस presentation में basically हम ये देखेंगे कि role of nutrition, हम nutrition क्यों पढ़ना चाहते हैं, इस nutrition का क्या फायदा होता है infants में, then what is the role of gut microbiota, ये gut microbiota क्या होता है, how it is helpful in growth, immunity, and then we'll be going to studying about the nutrition in toddlers, then proteins requirement, उनके vitamins और mineral requirements. तो ये हमारी स्टडी जो है इस प्रकार से होगी हमारी प्रेजेंटेशन कि न्यूट्रिशन क्यों पढ़े, उसके बाद उनका इंपॉर्टेंस इन्फेंट्स में, टॉडलर्स में एंड द रोल ऑफ गट माइक्रोबायोटा. सो देन कमिंग टू द रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन. सो व्हाई वी वांट टू स्टडी न्यूट्रिशन. हम सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो है अर्ली चाइल्डहुड में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन अर्ली एज में नहीं मिलता देन इज मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस, हिज इम्यूनिटी इज वीक, उसकी जो हैबिट्स होती हैं दे आर नॉट गुड, ही विल नॉट बी एबल टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ एंड ही विल मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस, रिकरेंट कफ एंड कोल्ड. So as a result, eventually we can say if the nutrition is healthy and if it is a healthy nutritious diet is given in early years of life, then definitely a child can live a very healthy and happy life. So this is the importance of nutrition and how this helps. We'll be studying in different slides in coming slides. So coming to the next, so we'll be studying now in detail about nutrition in infants और उनका क्या फायदा होता है infants में. Infants का मतलब होता है वो बच्चा जो within 1 year of life we call it as an infant. अब within first 6 months of life जो nutrition बच्चे का होता है that is the breast milk. Now ये हम सब जानते हैं as per the WHO, as per the UNICEF and as per American Academy of Pediatrics, even the Indian government organization, everybody says that first 6 months are very very important for the child for its nutrition and that should be given exclusively by the mother. So this is the importance of breast milk. But अब generally क्या होता है, what happens, why this breast milk is so important? See, when humans or newborns जो born होते हैं or infants what we call, when the newborns are born, उनका जो immune system होता है they are very very immature or it is you can say functionally बहुत sensitive होता है. As a result, they are more prone for infection. So, through breastfeeding, we basically stimulate or we make their immune system strong enough so that वो बाहर के infections को बाहर के environment से infections ना catch करें. और उसी के कारण UNICEF और American Academy और WHO बोलता है कि first 6 months are very much important for the child to exclusively breastfeed. अब ऐसा क्या है breast milk में और mother feed में जो इसको इतना unique बनाता है? Firstly, there are a lot of studies are there कि breastfeeding अगर हम कराते हैं initially for 4 to 6 months exclusively without giving any top feeds, then in future life child will be less prone for various infections, पेट के infections, diarrhea, recurrent bloating, constipation या छाती के infection, respiratory tract infections, recurrent pneumonias, आजकल बच्चों को skin allergies बहुत हैं, dermatitis, वो चीज़ों से वो दूर रहता है, wheezing, bronchiolitis और आगे चल के टाइप 1 डायबिटीज जिसके कारण हो सकता है बच्चे को ओबेसिटी हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की दिक्कत हो सकती है, थायराइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस जिसमें हो सकता है कॉन्स, अल्सरेटिव एंड इवन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स. दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स जो इन बच्चों में हो सकती है अगर हम इन बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क इनिशियल 4 to 6 months में ना दें. सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ गिविंग ब्रेस्ट मिल्क इन द फर्स्ट 4 to 6 months. अब ये एक पाई चार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क का है. इसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया गया है वो है लिपिड्स एंड लैक्टोज. इट इज फाउंड इन 40 to 70 grams per deciliter और प्रोटीन्स इट इज फाउंड इन 8 grams per liter ऑफ मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क. बट जो सबसे यूनिक चीज है
जो इस ब्रेस्ट मिल्क को यूनिक और बहुत एक्सक्लूसिव बनाती है वो है HMOs which are known as human milk oligosaccharides. Although they are present in the minimum amount, they are present in just 5 to 15 grams per liter of breast milk, but these are the ones which are the most important and which make the breast milk unique. अब ये HMOs क्या चीज होते हैं और इसमें ऐसा क्या है जो ये ब्रेस्ट मिल्क या मदर फीड को इतना यूनिक बनाते हैं? सो now, what are these human milk oligosaccharides? क्या होते हैं ये चीज? HMOs are basically these are complex group of indigestible sugars जिनको हम बोलते हैं oligosaccharides and they composite the third largest solid component of human milk. वो हमने अपनी पाई चार्ट में देखा कि they composite the third largest, सबसे ज्यादा मात्रा में लैक्टोज होता है और लिपिड्स, उसके बाद दूसरी चीजें, और HMOs होते हैं सबसे कम होते हैं. अब अभी तक की जो वेरियस स्टडीज और रिसर्च हुई है उसमें दे हैव बीन फाउंड दैट देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ HMOs. हमको वो सारी डिटेल्स में नहीं जाना, लेकिन हमारे लिए जो तीन इंपॉर्टेंट HMOs होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल फ्यूकोसाइलेटेड, न्यूट्रल नॉन फ्यूकोसाइलेटेड एंड द थर्ड वन इज एसिडिक. ये तीन चीजें, ये तीन जो है डिफरेंट HMOs जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारे और जो मिल्क, ह्यूमन मिल्क और यू कैन से ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं. अब ये ऐसा, इनमें क्या फीचर्स हैं HMOs में जो ये बच्चे का इम्यून सिस्टम बेटर करते हैं और बच्चे को आगे इन्फेक्शन से रोकते हैं फ्यूचर लाइफ. It has been said and various studies and recent evidences have shown that these HMOs they act as immune modulators. Means to say ये बच्चे का इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर देते हैं in a very strong way, as a result of which उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है that it becomes resistant to recurrent respiratory tract infections, diarrhea, bloatings, and various other infections. So, as a result of which, if their immune system is healthy, the child will be less prone for various infections, and he can lead a better, healthy, and a prosperous life. So, ये इनके advantages होती हैं HMOs की. अब ये HMOs immunomodulators की तरह कैसे एक्ट करते हैं? ये बताया जाता है कि ये जो HMOs होते हैं, ये जो हमारे बॉडी में जो पैथोजेंस होते हैं, हमारी बॉडी में अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं और बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं. जब इनकी मात्रा डिस्टर्ब हो जाती है उसके कारण व्हाट वी कैन गेट गट इश्यूज, गट डिसबायोसिस, और जो आजकल रीसेंट थ्योरीज हैं हो जाती है गट लीकी गट, as a result of which you may have symptoms of higher stress disorders, you can have anxiety, you can have behavioral symptoms if your gut is not healthy due to the differences of what we call the leaky gut or gut brain axis. So ये जो HMOs होते हैं ये हमारे जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं इंटेस्टाइन्स पे जाने से. जब वो उनको प्रिवेंट वहाँ करेंगे तो एज अ रिजल्ट इनका इन्वेजन इंटेस्टाइन्स में कम होगा, तो एज अ रिजल्ट गट इश्यूज कम होंगे. दूसरी चीज होती है हमारे गॉबलेट सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के, हमारी जो इम्यून सिस्टम और हमारी जो ग्लूकोजल सेल्स में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, उनकी मात्रा को ही बढ़ाते हैं. हमारे जो इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं उनकी मैच्योरेशन को ही बढ़ाते हैं. एज अ रिजल्ट इन HMOs में एक प्रीबायोटिक एक्टिविटी भी होती है. एज अ रिजल्ट ऑफ इट दे हेल्प इन प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरियाज और हेल्दी बैक्टीरियाज. एंड द मोस्ट कॉमन जो हेल्दी बैक्टीरियाज जिनमें पाए जाते हैं जो नोन है, और इट हैज बीन फाउंड दैट दे आर फाउंड टू बी लेस इन चिल्ड्रन who are on the spectrum, especially bifidobacterias और lactobacilli. ये दो स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरियाज हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों में उनके गट में फाउंड कम की गई हैं. स्टडीज भी हुई हैं जिनमें पता लगा है कि बिफिडोबैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलाई की मात्रा गट में जो स्पेक्ट्रम में होते हैं उसमें कम होती है. सो हेंस दीज HMOs indirectly help in promoting the bacterial growth of these healthy bacteria, especially the bifidobacteria and lactobacilli. अब अगर मैं समराइज करूं सिंपल 4 पॉइंट्स में कि इनके बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ HMOs के क्या होते हैं, तो ये है कि दे विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेनिक इन्फेक्शंस, they will promote intestinal maturation and functions, they will influence the gut bacteria by the means they will help in promoting the growth of good bacteria, and they will stimulate or modulate the immune system in a better way, thereby preventing future infections in future and adulthood. अब ये एक डायग्राम हमने बनाया है जो हमको पूरे चीज का HMOs को समराइज करता है. अब हमने ये बताया कि जब बच्चा पैदा होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक और नेटिव या सेंसिटिव होता है. एज अ रिजल्ट उस दौरान हमको उसको क्या फीड देना है, क्या न्यूट्रिशन देना है जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए सो दैट वो बाहर के इन्फेक्शन से लड़ सके और अपनी रूटीन के जो इन्फेक्शन होते हैं कफ एंड कोल्ड उनसे बच सके. तो वो फायदा हमको मिलता है अगर हम बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करें फर्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि उसमें HMOs होते हैं. और HMOs मोटी मोटी भाषा में
They will prevent protection against the pathogenic infection. They will help in providing multiple layers of infection. They will help in establishing the gut microbiota in a more healthy way by promoting the growth of bifidobacteria. अब अगर हम देखें कि जो इम्यूनोमॉड्यूलेशन मैकेनिज्म होता है HMOs का, ये कैसे करता है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो मात्रा है जहाँ पे ये राउंड गोले गोले छोटे दिखाए गए हैं ब्लू कलर के, these are called HMOs. they basically act as probiotics. और ये जो ग्रीन वाले हैं जिनके चारों तरफ स्पाइक्स हैं, these are considered to be pathogenic bacteria. अब ये क्या करते हैं, ये जो HMOs होते हैं ये इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बाइंड कर जाते हैं। अब ये देखिए, ये देखोगे ये रिसेप्टर यहाँ बाइंड करेंगे। अब जब ये बाइंड करते हैं तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया की आगे की स्पेस जो होती है खाली नहीं रही, ये इनसे बाइंड हो गए। तो एज अ रिजल्ट ये वाले जो बैक्टीरियाज हैं ये इंटेस्टाइन पे बाइंड नहीं कर पाते। तो जब ये बैड बैक्टीरियाज इंटेस्टाइन पे नहीं बाइंड कर पाते तो लीकी गट इश्यूज और जो ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं लाइक इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और जो हम पाए जाते हैं SCF, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, which are basically released as a result of fermentation process of the bacteria. अब वो गुड बैक्टीरिया हो, बैड बैक्टीरिया, नॉर्मली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्ट ऑफ प्रोपियोनिक बैक्टीरिया, एंटेरोबैक्टीरिया इफ दे आर इन लार्ज अमाउंट। तो जब ये बैक्टीरिया से ये SFAs एंड अदर टॉक्सिन्स निकलते हैं, ये लीकी गट जो होती है बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में, उनसे रिलीज होके ये जो नीचे प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, मतलब जो स्वेलिंग कॉज करते हैं लाइक इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इनको प्रमोट करके दे विल गो एंड एक्टिवेट द यू कैन से inflammatory zones of the brain जहाँ पे ये एक्टिविटीज और इन्फ्लेमेशन करते हैं लाइक हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, एंजाइटी, जो हम चीजें जनरली पाई जाती हैं those children who are on the spectrum. So as a result of which we can say if the child is fed with the probiotics or if it is given in the first early years of life with HMOs, तो ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये बाइंड नहीं करेंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो इंटरल्यूकिन मार्कर्स, साइटोकाइंस जो स्टिमुलेट करते हैं इन्फ्लेमेशन को, वो नहीं होंगे। तो चांसेस हैं कि जो एंजाइटी इश्यूज और जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं वो कम। नाउ व्हाट इज गट माइक्रोबायोटा एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो अब ये जाएंगे क्या गट माइक्रोबायोटा सिर्फ इम्यूनिटी में हेल्प करता है या उससे ऊपर भी इसका कोई रोल है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट, व्हाट इज गट माइक्रोबायोटा, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट। बेसिकली हम पहले जानते हैं कि हमारा जो इंटेस्टाइन्स होते हैं या GI सिस्टम से मतलब इट इज स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द from the neck, complete stomach and going down to the intestine. So इसमें डिफरेंट मात्रा में डिफरेंट बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। In fact, it is said the weight of these microbiotas and even more than the weight of an adult human. So अब इनकी जो कम्युनिटी है, the collection of these microorganisms which are present in our body in different areas is known as microbiota. अब various benefits and various studies or recent evidences have shown that ये जो microbiota है इनके benefits are much higher because they help in promoting the growth of good bacteria, and evidence have shown that the role of these probiotics is very evident in promoting a healthy and happy life, in the sense they will reduce the recurrent risk of infections, GI infections, bloating, diarrhea, respiratory infections, digestive infections, and as a result will make the immune system of the child healthy so that they can live an infectious free life in future. So अब हम देखते हैं what are the factors which are affecting gut microbiota. अब जो gut microbiota है, the gut microbiota which is there, this gut microbiota can affect right from the period when the child is in the womb और जब बच्चा during the period of conception only. So this is the importance that the gut microbiota can be altered right from the period when the child is in the womb. So what are the factors which can affect the gut microbiota? Most important thing is maternal diet. मदर क्या खाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका असर बच्चे के गट माइक्रोबायोटा पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर माँ की डाइट क्या हाई फैट मैटरनल डाइट है, ये स्टडीज हुई हैं और एविडेंसेस भी हैं कि जो मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हाई फैट डाइट लेती हैं, उनका जो उन बच्चों का जो गट माइक्रोबायोटा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इट इज़ मोर टुवर्ड्स अ बैड बैक्टीरियाज एंड लेस टुवर्ड्स द हेल्दी बैक्टीरियाज। तो उन बच्चों में जिनकी मदर्स हाई फैट डाइट पे होती हैं, उन बच्चों का जो गट्स होते हैं उनमें जो मात्रा पाई गई है, जो गट माइक्रोबायोटा में लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया की मात्रा कम पाई गई है कंपेयर टू अदर्स। सिमिलरली दोज मदर्स हु आर ऑन लो आयरन डाइट, दोज हु आर टेकिंग लो ऑन कैल्शियम, स्मोकिंग, अल्कोहल, these are all the factors which can prone for increased neural tube
defects in children, increased neurodevelopmental disorders, and various other decreased immunities and various other infections, or you can say allergic infections in child. So ये है importance of maternal diet during pregnancy. दूसरी चीज आती है what is the mode of delivery. अब मोड ऑफ डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करेगा कि बच्चे का आगे का स्टेटस, उसका हेल्दी कैसा रहेगा, उसके आगे के इन्फेक्शंस कैसे होते हैं, उसकी इम्यूनिटी कैसे डेवलप करती है. अब ये फाउंड किया गया है स्टडीज में कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं उन बच्चों में जो गट माइक्रोबायोटा होता है इट इज इक्विवेलेंट और ऑलमोस्ट सिमिलर टू द गट माइक्रोबायोटा ऑफ द मदर. लेकिन जो बच्चे सिजेरियन से होते हैं उन बच्चों में जो गट माइक्रोबायोटा मतलब जो गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो होते हैं सिमिलर टू दैट ऑफ द माइक्रोबायोटा व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ द मदर. वो हार्मफुल होते हैं. एज अ रिजल्ट इट इज फाउंड that those child who have been delivered by cesarean, they are more prone for frequent infections, recurrent cough and cold, or maybe other neurodevelopmental disorders compared to those children who are born by normal delivery. The reason because उनका gut microbiota healthy होता है and it is similar to that of the mother's gut microbiota. अदर चीजें होते हैं breast fed and formula fed. इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो breast fed infants होते हैं हमने पढ़ा कि उनमें HMOs होते हैं और HMOs में prebiotic activity होती है. They will promote the growth of healthy bacteria like lactobacillus and bifidobacteria. Whereas जो formula fed होते हैं उनमें ये चीजें नहीं होती हैं. Although they have been now been promoted with probiotics, but जो एक HMOs का फायदा होता है जितनी मात्रा में lactobacillus bifidobacteria की ग्रोथ करता है उतना इफेक्ट formula feed से नहीं मिलता. So what is the importance of nutrition in toddlers? अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन टॉडलर्स के बारे में. देखिए जो टॉडलर्स का जो पीरियड होता है दैट इज ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 6 years इज वेरी मच important because during this period there is an enormous brain growth which provides them with जो उनके cognition, उनके vision, language और motor skills को develop करता है. अब ये डायग्राम है, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है जो एक क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेट करता है. अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें तो जो फर्स्ट 6 to 24 वीक्स ऑफ प्रीनेटल वीक होते हैं ये प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारा सेल माइग्रेशन और न्यूरल प्रोग्रेशन शुरू होता है. अब जब न्यूरो जनरेशन और न्यूरोलेशन प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, सेल माइग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सिनैप्टोजेनेसिस, प्रूनिंग. हम उस डिटेल में नहीं जाते लेकिन हम ये जरूर जानेंगे कि जो इनिशियल 6 to 24 प्रीनेटल वीक्स होते हैं बच्चे का उसमें न्यूरोलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. एंड वंस द चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर दैट प्रोसेस ये ड्यूरिंग दिस पीरियड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग स्पेशली hearing, speech production, receptive language. It keeps on continuing during this period, and by the age the child reaches between 3 or 4 years, between 3 to 5 years, इनका peak maximum होता है. So we can see clearly that between 3 to 5 years, hearing, speech, receptive language, it is maximum, and then there is a small by them there is a plateau phase and start regressing. Means to say this is the period where early intervention or where these skills, receptive powers, the child's ability to understand, the child's receptive language, social skills, cognitive functions develop maximum. So this is the importance of early nutrition. अगर हम इन चीजों पे फोकस करें तो जो early nutrition it is very much important because if we provide them with healthy nutrition during this period, definitely the receptive skills, the cognition, the language will be better. And another important thing होती है synaptogenesis जो during this period it starts right from 3 months but it continues up to 15 to 18 years. Synaptogenesis मतलब जो कनेक्शंस बिटवीन बनते हैं बच्चों के ब्रेन में एंड एक्सॉन सेल्स में जो फर्दर हेल्पिंग में करते हैं प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड हायर कॉग्निशन फंक्शन. बट एक चीज मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो बच्चे स्पेक्ट्रम में होते हैं वहाँ पे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं प्रूनिंग. नॉर्मली व्हाट हैपेंस आफ्टर 5 to 6 years ये जो एक्स्ट्रा कनेक्शंस होते हैं और जो साइनेप्टोजेनेसिस जो बनते हैं, जो एक्स्ट्रा कनेक्शंस होते हैं, दे हैव टू बी फेड ऑफ, वो खत्म हो जाते हैं as a result so that the child can carry more complex activities, more complex functions. Means to say suppose अगर हम देखें जो normal neonatal reflexes होते हैं like Morrow's reflex or atonic reflex or any other reflexes, once the child born they start slowly and slowly over the period of 2 to 3 months they start regressing because जो वो जो synapses होते हैं, extra synaptic connections होते हैं, they have to be cut off and they have to be cut off so that they can carry out higher mental functions or higher functions. अब जब तक मोरोज खत्म नहीं होगा तो बच्चा आगे के जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं, चलना, अपनी बॉडी को सपोर्ट करना, नेक होल्डिंग करना, वो नहीं कर पाएगा. और यही चीज होती है कि जो बच्चे स्पेक्ट्रम में होते हैं उनमें डेवलपमेंट डिलेज होते हैं. वो कुछ रिफ्लेक्सेस उनके कंटिन्यू रहते हैं टिल फर्दर
life till childhood. Reason is because उनमें pruning नहीं होती है. So in short, pruning means the extra synapses or connections which have been formed, they have to be removed, which is lacking in children who are on the spectrum. So this is the importance of this chart. Now अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, the role of specific nutrients, हम देखें iron plays a very important role in myelination. Zinc, which plays a very important role again in neurosecretion, that is secretion of various neurotransmitters. Calcium, which plays a very important role in bone formation. Healthy bones provides immune system, and normally there is a recurrent risk of fractures. The bones are prone, especially for children who are on the spectrum. The reason is because calcium deficiency की मात्रा कम हो सकती है, or they may be because calcium and vitamin D are more important for making the immune system very strong. So as a result, the children on the spectrum, the immune system is very weak compared to the neurotypical. So as a result, because the vitamin deficiencies, calcium deficiencies are there. Again, like DHA, which is very, very important for normal brain development. Probiotics, which play a very important role in modulation of the gut microbiota. So this is the importance of the specific nutrients and how they specific role in helping the brain development and modulation of the immune system. Now, अब एक बात आती है प्रोटीन्स की. नॉर्मली हम देखते हैं, हम जनरली कोशिश करते हैं जो बच्चे स्पेक्ट्रम में होते हैं या इवन अ नॉर्मल न्यूरोटिपिकल चाइल्ड, देयर इज अ जनरली अ मिसकंसेप्शन इज देयर कि अगर हम बच्चे को हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, इट इज वेरी गुड. सो अब यही हम आगे की 2-3 स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सेस प्रोटीन इज रियली गुड और नॉट. So what is there? There is one thing we should know, that what are the benefits of proteins. Proteins जो हैं वो जनरली हमारी बॉडी की बैकबोन कंसिडर किए जाते हैं, because they are responsible for the formation, carrying out lot of functions. अब देखिए ये हार्मोन्स में भी हेल्प करते हैं. They are responsible for the secretion of various neurotransmitters. ग्रोथ में हेल्प करते हैं, enzymatic functions में हेल्प करते हैं. They are important source of energy. They carry out so many functions in different parts of the body. तो इतनी मात्रा में प्रोटीन्स हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, कितने इनके फंक्शंस हैं, तो क्या अगर हम प्रोटीन्स को हायर मात्रा में दें तो आर दे बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर किड्स और नॉट. तो लेट्स सी हाउ इम्पोर्टेंट इज द डोज ऑफ प्रोटीन्स और हाउ एडिक्वेट द प्रोटीन शुड बी गिवन इन चिल्ड्रन. सो एक चीज है और एक स्टडी है, और यू कैन से देयर इज वन हाइपोथेसिस व्हिच इज नोन एज अर्ली प्रोटीन हाइपोथेसिस. अर्ली प्रोटीन हाइपोथेसिस बोलता है, and the evidence states that if high levels of protein are given in first year of life, then it is associated with high weight gain, obesity and metabolic syndrome. इसके हिसाब से बोला जाता है कि अगर हम बच्चों को ड्यूरिंग फर्स्ट 1 year to 2 years of life हाई प्रोटीन मात्रा दें, या कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो दे आर मोर रिस्क फॉर ओबेसिटी एंड अदर यू कैन से डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स इन फ्यूचर लाइफ. द रीजन व्हाई इट हैपेंस बिकॉज so insulin-like growth factor, which is known as IGF-1, it is a major growth regulator during the first 1 to 2 years of life. अब जब बच्चा प्रोटीन हाई डाइट पे होता है, तो as a result this IGF-1 is stimulated, and when this levels of IGF-1 is stimulated, there are increased weight gain, there is increased risk of obesity in future life. This is the basis of early protein hypothesis. अब early protein hypothesis को अगर मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं कि अगर बच्चे को हाई प्रोटीन की मात्रा दी गई during first 1 to 2 years of life, तो ये क्या करेंगे, हाई प्रोटीन अगर हम देंगे तो ये इंसुलिन को सिक्रीट करेंगे. इंसुलिन को कैसे सिक्रीट करेंगे, ये एमिनो एसिड्स प्रोडक्शन जो हाई इंसुलिन लेवल्स को बढ़ा देंगे. अब जब हाई इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाएगा तो IGF-1 व्हिच इज अ मेजर ग्रोथ रेगुलेटर इन फर्स्ट 2 years of life, उसकी मात्रा बढ़ जाती है. अब through some complex mechanisms of cellular growth pathway which we are not discussing, it will result in the weight gain in 1 to 2 years of within first 2 years of life because of increased adipogenic activity. मतलब increased adipogenic means fat production activity. So और अगर ये weight gain होता है within first 2 years of life, then in future is the child will be more prone for heart diseases, he will be more prone for diabetes, he will be more prone for metabolic syndrome and various other disorders which are associated with obesity. So अब ये चीज बच्चों में कैसे होती है, हाई प्रोटीन की मात्रा हम कैसे दी जाते हैं. जनरली जो मदर्स वर्किंग होती हैं या those who are not able to express or those who are not able to feed their child properly or due to various other reasons the lactation is poor, so unfortunately the child have to be given a formula feed. But because of the given formula feed, what happens, they have a high protein content and that can result in high protein weight. Another reason is that sometimes those children who are on the spectrum or because they are on a very restricted diet, limitation diet, so in order to make their body, generally होता है कि बच्चा weak है, बच्चा खा नहीं रहा, तो हम इसको high protein दे देते हैं. So parents start giving them a high ketogenic diet, so high protein diet,
and this is actually not it is actually not good for the baby. It is actually harmful for the child. The reason we have studied about this, and as a result, in future life, in adolescence or during the age of teenage, there may be increased risks of obesity and other disorders associated with that. अब ये चार्ट है जो हमको क्लियर बताता है कि प्रोटीन की मात्रा एक ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला फीड में कैसे वेरी करती है। अब अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो सबसे नीचे वाली लाइन है, पर्पल लाइन, ये हमको बताती है कि जो ब्रेस्ट जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है। जो इन्फेंट्स की प्रोटीन रिक्वायरमेंट जनरली होती है इट इज 1.2 टू 1.4, द लोएस्ट लाइन व्हिच इज देयर दैट इज द पर्पल। जो ब्लू लाइन है वो हमको बताती है कि ब्रेस्ट फेड मदर्स और द ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स जो बेबीज मदर फीड लेते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। मींस टू से द प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन मदर्स मिल्क इज अराउंड, इट इज just below 2, it is somewhat between 1.8 to 1.9, but the protein content in the formula feed is as much high as 3 grams, starting right from 2 grams to as much as 3 grams, varying from different brands and different companies. So as a result, जो actual मात्रा है बच्चे की during first 1 to 2 year life, 1 year of life is hardly 1.3 to 1.4. But अगर वही बच्चा formula feed लेता है, it is not a mother feed, it is totally on formula feed, तो आप देख सकते हैं कि how much amount of protein is going in his body. It is from 2 to 3 grams, varies from different ones. As a result, the weight gain will be more. इसीलिए जनरली अक्सर हम पाए जाते हैं हमारी ओपीडीज में, हम जनरल अपनी रूटीन डे एक्टिविटीज में देखते हैं कि जो बच्चे टोटली एक्सक्लूसिवली फॉर्मूला फीड पे होते हैं उनका वेट गेन एक्सेसिवली बहुत ज्यादा हाई होता है कंपेयर टू द चिल्ड्रन हु आर एक्सक्लूसिवली मदर फेड। तो देखने में तो ऐसा लगता है बच्चे का वेट अच्छा है, चीज छवि अच्छे से खा पी रहा है, वेट गेन अच्छा है, बट नो, actually it is basically a misnomer कि excess weight is a good for the baby. It is basically a sign of malnutrition and ultimately in future life it can result in various other disorders जो हमने अभी पिछली slides में पढ़े। So this is the importance of giving protein in right amount and right through right concentration and through right mode of feeding. अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि टॉडलर्स, अब जो टॉडलर्स होते हैं ऐसे हमने पढ़ा कि जो टॉडलर्स की रिक्वायरमेंट होती है इज क्वाइट डिफरेंट दैट फ्रॉम द अडल्ट, बिकॉज दिस इज द ग्रोइंग एज, दिस इज द पीरियड वेयर देयर इज कॉग्निशन, वेयर देयर इज मोटर स्किल्स, वेयर देयर इज इंटेलिजेंस एंड वेयर देयर इज स्पीच रिसेप्टिव लैंग्वेज इज डेवलपिंग। सो दिस चार्ट बेसिकली क्लियरली शोज कि अगर हम देखें विटामिन डी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 1 year ऑफ लाइफ इज अप्रोक्सीमेटली 7.5 times हायर देन दैट ऑफ द एडल्ट। यही चीज अगर हम देखते हैं विटामिन ए की, it is approximately 5 times compared to an adult. Similarly, for vitamin C, it is similar to 5 times than an adult in the age of 1 year. So it clearly shows that during this period of 1 to 4 to 5 years of life is so much important, because here the amount of vitamins, minerals and proteins which are given is almost 3 to 4 times higher compared to an adult. That is the reason, that is the importance of nutrition in the early life. If we miss this golden phase of period of child's development, we will not be able to revert it back in any way, whatever diet, whatever mode you give it. So that is why giving appropriate amount of nutrition in appropriate form in the right dosage is very, very important during this period of time. Now coming to if we discuss about the role of toddlers, we can see the requirement of minerals is approximately 4.5 times than compared to an adult. Now then if we talk about energy, now why the energy requirement is high? In case we can say between 1 to 5 years of life, the energy requirement is almost 2 to 2.5 times compared to an adult. The reason is because they are continuously using their brain, they are continuously using the activity, they are almost running here and there, they are more involved in gross motor, there is body requirements are more, their body is growing, they have to grow, they have to use their body, they have to use in more various ways, various activities have to be done. So as a result of it, what happens? The requirement of energy, the requirement of proteins is very, very high. Proteins, definitely the requirement is high because these are the backbone. They have to be required for energy. They have to be required to carry out various other energy functions, metabolic processes, and various other neurotransmitter secretions, which is very, very important during this early years of life. So this is the importance of energy and protein and how they vary and how the amount is important during this period compared to an adult life. So discussing about in detail about everything, I would just like to summarize through this beautiful diagram which I have taken from the net, and basically this diagram clearly shows
that how the factors starting right from the infancy, or you can say right from the period when the child is not born, he is still in the womb, till the development, till the child reaches the toddler age. So from right from the top, we can see that it is the mother's diet which plays a very, very important role, and how the diet can influence. As we have seen, if the child is on a, if the mother is on a high maternal fat diet, it can go for the gut microbiota can alter. Also, if the mother is taking low calcium, low iron, so the diet influences the microbiota of the mother. Now, the gut microbiota of the mother will also be altered. As a result, it will alter the microbiota of the infant. Now, the mode of delivery will also alter the microbiota of the child. If it is a normal delivery, it will be similarly the microbiota will be transferred. It will be a better microbiota or a healthy microbiota compared to the child who is born to a cesarean. Then coming to the different feeding practices, how the child is being exposed to food, what are the eating habits. जनरली व्हाट हैपेंस नाउडेज आजकल होता है कि मदर्स पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, तो बच्चे के पीछे पीछे भागते रहते हैं, बेटा खा ले, चाहे उसको भूख हो ना हो, हम जबरदस्ती ठूसने की कोशिश करते हैं. This idea is absolutely wrong. This can increase in hyperactivity. This can develop behavioral symptoms. There is one thing what we have to follow, what is called as responsive feeding. बच्चे के आगे खाना रख दो, बच्चे को भूख है तो अपने आप खाएगा. There is no other way. You don't have to provide them with alternatives. Generally क्या करते हैं, हमने कुछ खाना रखा, आगे बच्चे ने 15-20 मिनट नहीं खाया, 2-3 अटेम्प्ट्स मारे, ट्राई किया, नहीं खाया, तो generally we will provide them with alternative. अच्छा चिप्स खा लो, अच्छा कुरकुरे खा लो, जंक दे दो. Ultimately what will happen? He will start developing hyperactivity, he will start developing behavioral symptoms. So as a result, his immunity will also be compromised. As a result, the gut microbiota will be compromised. So in total, a healthy life in future may be affected. So this is the importance of responsive feeding and positive parenting. Keep the food there, develop healthy habits. All the family members should eat together. They should sit on a dining room. There should not be use of any mobiles or TVs during the time of feeding. And there should be a proper time of feeding. All the family members should have a proper time, and all the family members ideally should eat together without watching TV along with the kids. Then there is the food choices, as we have discussed about what are the good, healthy and bad foods, what should be avoided. Now, definitely I would say that Corona or COVID-19 pandemic is basically, I can say it is a blessing in disguise for our kids, because as a result of this, they are not eating junk food, and definitely that can in some way or the other can keep their gut healthy for some period or maybe for future. So the things which have to be avoided are all junk food, pastry products. Those are high in calories, drinks, sugars, carbonated drinks. Those which are considered to be healthy, definitely they are high in proteins, high in minerals, low in fat, high in minerals, and variety of child greens. And they should be prepared from the local food, from the local items which come from the area. So a diet which is balanced in protein, carbohydrate, and fats is recommended. Now, how to get that balanced diet? Now, it is very, very difficult. What is this balanced diet? We know that carbohydrate, protein, and fat should be given in the balanced amount. But what is that balanced amount has to be given? There is a one concept is there which is known as healthy plate method or my healthy plate method. So it clearly says that your half plate should consist of fruits and vegetables, and the remaining should consist of small amount of grains, proteins, and dairy. Means there should be a milk, there should be fruits and vegetables which will constitute the 50% of the plate, and the remaining should be a composition of grains, proteins, and dairy products. If we take these components in different amounts as mentioned, our plate, it will be a healthy, balanced diet for our kids, compromising the adequate amount of carbohydrates, fats, and proteins which are required. So this was the small video, informative video about the role of nutrition in early childhood and how it can play a big and major role in contributing our healthy life in future and adult life. Thank you.